गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज चलिए मैं आपसे हिंदी में ही बात करता हूँ। अलग अलग रील में देखता हूँ, यूट्यूब में तो नहीं गया। हर लोगों की अपनी अपनी दलील है। इंग्लिश बोलना ऐसे सीखना, ऐसे सीखना, ऐसा सीखना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हर लोगों की एटमॉस्फेयर एक जैसी है? क्या नहीं है। कोई नाज में पला बड़ा है, कोई हर हमेशा वैसा ही एटमॉस्फेयर पाया है, वो कर सकता है। लेकिन मैं एक बात उन लोगों को जरूर बता दूं जो बोलते हैं हिंदी आपने कैसे सीख लिया, इंग्लिश से सीख लोगे। अरे हिंदी क्यों नहीं सीख लेंगे भाई, हिंदी में पला, हिंदी में बड़ा, जहाँ उठता हूँ बैठता हूँ लोग हिंदी ही बोलते हैं। जब हिंदी बोलते हैं तो खास करके क्या हुआ है, हम वह हिंदी समझते हैं जो साहित्य में लिखा जाता नहीं। आम बोलचाल की भाषा की हिंदी हम समझते हैं। एक आदमी साउथ इंडिया में पैदा हुआ, उसे हिंदी बोलने में दिक्कत है क्योंकि वह शुरू करता है अल इल आई से। एक आदमी नेपाल में पैदा हुआ, वो नेपाली बोलने में सक्षम है बट हिंदी बोलने में उतना सक्षम नहीं है। कह सकते हैं कस्तो छ रामरो छ लाइक दैट। एक आदमी हिंदी बोल लेता है लेकिन लिखने नहीं सकता है। वह हिंदी बोल लेता है इसलिए कि वो समाज में रहता, समाज में सारे लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी क्या, दुनिया की जितनी भी भाषाएं जिसमें लोग पैदा होते हैं आसानी से सीख लेते हैं, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसकी विशेष स्थिति को समझाने के लिए जरूरत पड़ती है। क्या दुनिया का हर आदमी हिंदी जानता है? क्या पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं? क्या नहीं। कहीं क्लिष्ट भाषा हो जाती है, कोई वर्ड हो जाता है, वहां पे फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरे मित्र जो भी इंग्लिश के फील्ड में हैं, आपसे निवेदन है, गलत सलाह बिल्कुल मत दीजिए। एक कहावत है, नॉन एजुकेशन इज बेटर देन इल एजुकेशन। शिक्षा नहीं दो लेकिन गलत शिक्षा मत दो, है ना। गलत शिक्षा देते हो उससे बढ़िया शिक्षा मत दो, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बातें हैं वोकेबुलरी की। क्या वोकेबुलरी जान लेने से आप इंग्लिश बोल लोगे? क्या आई चैलेंज यू कैन स्पीक। क्या पूरी डिक्शनरी याद करके आप पूरी इंग्लिश बोल सकते हो? क्या नहीं। तो क्या चाहिए आपको? कंपोजिशन। क्या चाहिए आपको? स्ट्रक्चर। क्या चाहिए आपको? कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए आपकी भाषा में? कमांड। और उस भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कमांड, फिर इंग्लिश को अपनी भाषा में कन्वर्ट करने का कमांड। अगर ये नहीं होता है तो आप लोगों को दगा कर रहे हो, सही रास्ते नहीं दिखा रहे हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में, मेरे पास कोई लिपस्टिक नहीं है, मेरे पास कोई कलर नहीं है, मैं कोई पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, सीधी सादी भाषा बोल रहा हूँ। पर मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी क्लास 6 में। आज 25 साल इंग्लिश पढ़ा करके रिटायर हुआ हूँ और दुनिया के किसी भी लोग को चैलेंज कर सकता हूँ बोलने में। तो बोलने के लिए एक बात मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन एकदम जरूरत है। ट्रांसलेशन क्या करता है? सबसे पहले हिंदी दुरुस्त करता है, इंग्लिश दुरुस्त करता है। दूसरी बात, आप डिक्शनरी रट नहीं सकते, वोकेबुलरी रट नहीं सकते। मैथमेटिक्स की तरह अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो आपके पास वोकेबुलरी की भी भंडार हो जाएगी, स्ट्रक्चर का भी भंडार हो जाएगा, और आप रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह बीच में बोलते बोलते अटकोगे नहीं। हेलो हाय इंग्लिश नहीं होती। कुछ फ्रेजेस बोल दिए इंग्लिश नहीं होता, कुछ प्रोनाउंसिएशन बोल दिया इंग्लिश नहीं होता। इंग्लिश वह होता है जब आप उसमें डूब जाते हो। इंग्लिश वह होता है जो दौड़ दौड़ के शब्द आपके पास खुद आ जाता है और आप बोलने लग जाते हो। आपको पहले भी हमने बच्चों को एग्जाम्पल दिए थे अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन फेल होकर के भी पास हो जाता है। तो फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना लीजिए। मैं एक नॉर्थ प्लेस में खड़ा था कि कोई लड़की किसी दुकान में थी, एक इंग्लिश लेडी और फॉरेनर आई, उसने कुछ पूछा, उससे लड़की को समझ में नहीं आया, फिर वो चलती बनी और बाद में बोलती है, ओह यू डोंट अंडरस्टैंड माय टंग। कुछ देर के लिए मुझे भी लगा क्या बोल के गई, जब देखा ओह मतलब वो हो गया सीधा सा सा, यू तुम, डोंट नहीं, स्टैंड अंडरस्टैंड, माय टंग मेरी भाषा, है ना। तो यहाँ पे सवाल उठता है, आप कुछ भी नहीं बोलते, आपका चेहरा बहुत कुछ बोल देता है। आप कुछ भी नहीं बोलते, हाथ हिलाते हो, पैर हिलाते हो, आंख हिलाते हो, इधर करते हो उधर करते हो, वही बहुत भाषा बोल देता, लोग समझ लेते हैं। और खास करके जो लिटरेचर पढ़ाता है उसको तो आदमी की बातें सुन करके वो सब कुछ सबका सब समझ में आ जाता है। उसके हाव भाव को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, चरित्र को दिन भर पढ़ाता रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे हमने दिया है आर्गुमेंट स्पीक इंग्लिश विथ डॉक्टर P.C. झा। मैं हूं जो
अब मेरे से मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे कहे एक आदमी ने कहा था स्टूपिड इंग्लिश, स्टूपिड इंग्लिश इसलिए कि जीओ गो होता है, डीओ डो क्यों नहीं होता, डू क्यों क्यों होता है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल उन्होंने दिया। लेकिन भाई इंग्लिश स्टूपिड नहीं है, आप स्टूपिड हो क्योंकि आपको नहीं मालूम है इंग्लिश के विषय में ऐसा बोलते हुए। अब सीधा सीधा सा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, इंग्लिश अलग अलग तरह के हैं। इंडिया में जो हम लोग बोलते हैं वो इंडियन इंग्लिश कहलाता है, ब्रिटिश में जो बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश कहलाता है, अमेरिका में जो बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश कहलाता है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलता है। सबों के अपने तरीके हैं। अब यहाँ पे जब हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया में दो तरह की इंग्लिश बोली जाती है, एक है प्रिस्क्रिप्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव सीधे बोलता है आप इंग्लिश को उसी तरह बोलो जैसा इंग्लिश मैन बोलता है। सपोज यू गो टू ए डॉक्टर, डॉक्टर्स आस्क यू व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यू टेल हेडेक। फॉर हेडेक से डॉक्टर गिव्स यू एनासिन, do you take Viralgan? No, because of the reason prescription is there. Similarly, in the same way, when the English is being spoken, particularly in the part of an Englishman, and whatever they actually speak, whatever they actually tell, that is to be copied. This is what is thought to be prescriptive English grammar. It is not stupid, my dear teacher. Understand it here. Nobody is perfect. Some mistake is to be there. But while we speak anything, must be careful about it here. Because learner knows it over that, teacher teaches better, he will just actually continue to just copy you throughout the life, or wrong thing will be really supposed to be in the mind of that fellow. So let me tell you it about that. To speak English better, first you do translation. Translation, whatsoever language you belong, that makes no difference at all. But I am here quoting Hindi. For example, you take the thing, मैं जाता हूँ. Many a student I asked, they simply tell I am go. Is it correct? No. A spoken will tell it is correct because you understood the thing. But when a common man speak, that person is not educated, even wrong English will do. But you are educated. Out of education you are speaking the thing. Your fluency is there, your cohesion is there, your diction is there, your dimension is there. In that case, if a little bit mistake is there, it will be just catching the color of a person like that, because you are not, you can say, actually having any pretension of being illiterate like that. That is not our consent. Here I told you, do the translation like mathematics. It will make your Hindi to be rich. Do the translation from English to Hindi. It will also make you to be rich. You will be getting the vocabulary of both the language. Besides that, a story is there, or maybe some sort of drama is there. If you practice it for a longer period, certainly nobody will be catching your hand, you can see. Don't run after dictionary, don't run after idioms and vocabulary, don't run after some of the words pronunciation. Ignorance here. Are the person who is speaking, are they Daniel Jones? No. Let me quote an example. My special paper was linguistics in MA. I learnt it, I practiced phonetics. When I went to school, I became flop. Do you know what is the reason? Reason was that I used to speak RP English, receive pronunciation you can say. I used to speak public school English, but here the person knows Indian English. It's not sure. You take the example, A. We Indian read it A, but it is A. A-N-D, we Indian read it ant, it is ant. W-A-S, was. We Indian read it was. Similarly, cricket is there, it is cricket. Ticket is there, it is ticket. Wicket is there, it is wicket. Language is there, it is language. You speak teacher, but it is not teacher, it is teacher. You speak that, it is not that, it is that. You speak at, it is not at, it is at. It is at. Then suppose a person belonging to India having their own accent I mean to say it over that, the language you speak, that is dancing on the head of English. This is because of the region you speak. The language actually mixed with that of the English, your own language you can see here. This is accented one. You take the example, just one example. A person belonging to Bhojpuri belt. Bhojpuri belt, I mean to say it over that person, when pronounced A-L-L, all, it's all. But they will be speaking all. When it is thought, they will not be speaking thought, they will be telling thought. It is not they telling, it is their language, Bhojpuri, accented and spoken with English. This is what happens to be so. You simply gaze it over. A person belonging to Bengal,
having the major language Bengali, if he speaks English, certainly difference will be there. You must have learned to actually listen to the various speech of Honorable Pranam Mukherjee. You must have listened to the speech of P. Chidambaram. P. Chidambaram speaks, I think, appropriate English. He must have actually got articulation. He must have got, you can say it about that, training in drilling and speaking English. Otherwise, he must have got this accent of South Indian language or the English, you can see. Sometimes you can say it about that. English become English. English how? Difficulty is there. In Hindi it is katinai. But in course of using you simply tell in life there is a lot of difficulty. कहने का मतलब जीवन में ढेर सारी डिफिकल्टियां हैं. क्या डिफिकल्टियां हिंदी का शब्द है क्या? नहीं. हमने प्रयोग करते करते ऐसे हिंदी बना दिया, हिंदीकरण कर दिया. और भाषा तो रोज ही नया रूप लेता है. आप किसी एक रूप में क्यों अटकते हैं? आप समझ गए हो गया. Get out from here, be off from here. What does it matter? You tell get out, you tell be off. What is the difference? No difference at all. You tell good morning, you tell namaste. You can say it about that, have your day nice. What is the difference? No difference at all. If you tell the thing, person understand the thing from simple to a little bit middle, from middle to a little bit high, and then to highest they must reach. Let me quote one example here. मैं खाता हूँ, according to simple present tense, it is I go. वह खाता है, he goes, because it is third person, so S or ES required with the verb. Suppose if I change a little bit, what is it here? मैं खाता ही तो हूँ. Certainly problem will be there. Most of the person can't actually just make it to be understood unless he or she practice our translation like that. मैं खाता ही तो हूँ, I do it. वह जाते जाते मर गया. He died of what? He died of or died from going? It's not here. Let me tell you it about that. वो बैठे बैठे सो गया. He slept off sitting. It's not here. मुझे जाना है. I have to go. मैं जाने को हूँ. I'm about to go. I'm about to go. मुझे जाना पड़ेगा. I will have to go. You see the thing. Which all things we speak in Hindi. Can we speak same thing in English? No. So my dear friend, whosoever is there, I am not actually blaming it here. Let me quote my example. I had seen the headmaster or principal of my school using the app to be written in wrong way. I started copying him. Even after 33 years, I cannot make it rectified because my hand has actually got habituation of it, you can see here. So, because besides, whenever you speak English. Maybe it is breaking legs, or maybe it is fragmented, maybe it is slurred, maybe it is asthmatic. First you develop confidence. I can do what one other can do. Certainly will learn. If you get at home some educated person, speak to him English. Some wrong will be there, it will be rectified. If nobody is there, stand before the mirror and speak whatever thing you want to speak. Speak on topic, not simply come here, go there. Sit down, stand up. It's not here. Cloudy weather, nice weather. Don't speak like that. This is not going to make you speak English. This is simply a kind of keeping you particularly in the area of illusion. So, my dear friend or student, maybe it will take time, but you will be perfect. If not perfect, at least in a situation to make a person to judge nicely, make a person to reply nicely. This is how English is learned to speak. Maybe I'm a little bit rough, that makes no difference at all. I have got a bitter drink a lot of time in course of my life. That makes no difference. I'm a poet also. I write English poetry as well as Hindi poetry. If I just used to follow this type of follow, certainly I would have to be just actually falling down and toppling down in the well of, we can say it about that, illusion and mess and nothing more than that. Thank you. अगर आपको यह अच्छा लगा तो आपका अपना कमेंट जरूर भेजेंगे और इस तरह मैं लगातार आपके साथ रहूँगा क्योंकि मुझे बैठे मन नहीं लगता. दूसरी बात, मैं सर्विस से रिटायर जरूर हो गया हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ है ना.
तकरीबन मुझे लगता है एक ही स्कूल में हमने 45,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अगर 30 साल गिना जाए तो लाखों स्टूडेंट्स हमारे होंगे, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग जगह पे। टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, दे कॉपी भी। लेकिन मैं इसमें, मुझे कोई प्राइड नहीं है। अगर टीचर हैं तो टीचर का काम करते हैं, क्या दिक्कत है? अगर थोड़ा सा जल के किसी को रोशनी दे सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, जो कोई भी हो, इस तरह इंग्लिश सीखी जाती है, जरूर सीखी जाती है, एकदम दृढ़ता के साथ। ईश्वर करे आप जल्दी सीखो। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस कर सकते हैं। चाहो तो मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हो। अगर दिल्ली वासी हो तो चाहो तो मेरे से मिल सकते हो। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।